शदीद गर्मी और इसके असरात पर एक सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसका एहतमाम कर्नाटक मीडिया एकेडमी ने असार सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स के ताउन से किया। इस प्रोग्राम में सरकारी अफसरान, क्लाइमेट साइंसदान, पब्लिक हेल्थ माहिरीन और बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन सेल के अरकान शरीक हुए, ताकि शहर में बढ़ती हुई गर्मी के बारे में रिपोर्टिंग और समझबूझ को बेहतर बनाया जा सके। ये इक़दाम एक क्लाइमेट एडवाइजरी स्टार्टअप की तजवीज़ पर शुरू किया गया था, जिसका मकसद सहाफ़ियों को दर्जा हरारत में इजाफे के हल तलाश करने के लिए अमल में शामिल करना था। एकेडमी ने इसे एक अहम कदम करार देते हुए कहा कि सहाफ़ी पॉलिसी साजों, अवाम और दीगर अहम फरीक़ीन के दरमियान एक अहम राब्ते का किरदार अदा करते हैं। वर्कशॉप में इस बात पर जोर दिया गया कि सहाफ़ियों और माहिरीन के दरमियान ताउन बढ़ाया जाए, ताकि अमली और काबिल अमल हल तलाश किए जा सकें और आने वाले सालों में वाज़ेह हिकमत अमली मुरत्तिब की जा सकें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात के मसले पर भी गुफ्तगू हुई और जोर दिया गया कि मुस्तनिद डेटा पर इन्हिसार किया जाए। कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर की मालूमात को अहम करार देते हुए कहा कि इससे सहाफ़ी दुरुस्त रिपोर्टिंग कर सकते हैं और झूठी खबरों का मुकाबला कर सकते हैं। इस सेमिनार में कर्नाटका फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, MS दिवाकरा, डायरेक्टर ऑफ द कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर, नित्या जे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट द क्लाइमेट एक्शन सेल, अपेक्षिता वर्षनी, फाउंडर ऑफ द हीट वॉच, Vikesh Singh, Chief of Communications at Asar Social Impact Advisors, and Karnataka Media Academy Chairperson Aisha Khanam ने खिताब किया। ईश्वर खंड्रे ने अपने खिताब में कहा कि रियासत ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए एक जामी क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार किया है और इस पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह हिदायत जारी की गई है। इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाला इदारा MPRI मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर इस मंसूबे पर अमल कर रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि जिला सतह के अफसरान और मुतल्लका इदारों को तरबियत देने के लिए जिला पंचायत दफातर के ताउन से प्रोग्राम्स मुनअक़िद किए जा रहे हैं, ताकि वो इस क्लाइमेट एक्शन प्लान को मुअस्सर तरीके से नाफिज कर सकें और इसकी निगरानी कर सकें। All human beings are responsible. The system is responsible. Yes, of course, this has been happening since a long time. So now all of us have to sit together and then mitigate this problem. Well, it is important right now. Don't you feel the pressure of the heat? Don't you say it's so hot 10 times a day? So it is important. The topic came to us very relevant. ASAR, which is a startup in climate change, which is a startup climate change advisory group. So they came to us with a proposal to see, if journalists can come forward and contribute to find a solution to control the heat or to beat the heat in rising heat in Bangalore. So we took this as an opportunity when ASAR came with the proposal, and then because since we have connect with the journalists are an important bridge who can connect with the policy makers as well as the public as well as the people concerned with this issue. So we are doing this workshop wherein we are trying to find a solution, and as the minister said, a resolution will be passed at the end of this workshop, so that there are steps taken to see that at least next year we don't run around saying it's very hot. A workshop for journalists to understand how heat stress is affecting citizens and how they can understand heat stress and its impact on Bengaluru citizens better. What are the solutions and how can we prepare better for it? Because often what happens is there is not enough information among journalists on how do we report better about it. It just ends up being reporting about IMD issues advisory. They don't even know how those advisories are issued. So we wanted to do a bit of a deep dive so that they are able to understand some more nuances of how heat affects people and of different sections, different backgrounds, right from kids to senior citizens, and then they can start doing more detailed stories. Along with temperature also, we are having some lot of other indirectly impact on our temperature actually. Maybe concrete structures, man-made disruptions, vegetations also play an important role in maintaining the maximum temperature for maximum duration. That is the major issue. Otherwise, this temperature, peak in temperature always there since 30-40 years. And climatic aberrations are always there. But because of man-made, other structures making lot of impact on maintaining the temperature. What we need to do, sir? We should give more awareness to the
ultimate users and being a media, and we also participate in many awareness programs, and that is the only way, creating awareness and maintaining more vegetation. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸು ಏನು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಏನೂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಗಂಟು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೂ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ 2016ನೇ ಇಸ್ವಿಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಹೌದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್? ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗ್ರಾಸರಿ ಡೆಲಿವರಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮೊಟೊ ಇದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್? ನಮ್ಮದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 15 ಅವರ್ಸ್ 18 ಅವರ್ಸ್ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಬಿಸಿಲು ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ 1 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಡಿಗೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಏನಾದ್ರು 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಮ್ದೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅವರು. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕುಡಿಗೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಂತದ್ದು ಊಟ ತಂದಿರೋ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ?